हेलो फ्रेंड्स, इंडियन क्रिएटर में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्क्वायर लाइट। मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पे देख रखे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स कभी बताते हैं हाउ टू मेक रिंग लाइट एंड कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं हाउ टू मेक रिंग लाइट स्टैंड। तो इस वीडियो में मैंने दोनों चीज़ एक साथ बना रखा है। बट मेरा जो है रिंग लाइट नहीं है जिसका शेप राउंड होता है, वो मेरा शेप जो है राउंड नहीं है बल्कि मेरा है स्क्वायर, इसलिए मेरा लाइट का नाम है स्क्वायर लाइट। सो गाइस, मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाया मैंने। सो गाइस, यही है अपना स्क्वायर लाइट, प्यारा स्क्वायर लाइट। इसके लुक के साथ साथ इसका जो है लाइट भी बहुत ही कमाल का है। इसका लुक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके लोअर पार्ट में जाइए तो में जाएंगे तो हम ऐसा दिखता है गाइस। ये इसकी जो स्टैंड है, इसके ऊपर ये पूरा खड़ा हुआ है अपना रिंग लाइट। सो गाइस, ये यहाँ से ऑन होता है तो ये बीच वाला लाइट जलता है और दोनों साइड का लाइट को जलाने के लिए यहाँ से बटन्स को ऑन करना होता है गाइस। अगेन गाइस, इसका लाइट जो है बहुत ही अमेजिंग है। और चलिए इसके बनावट को देख लीजिए वन बाय वन। इसमें पूरा डिटेल से अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो पूरा बना पाएंगे। When you want to get off that darkest ground, इसे हम मिनी हैक्सो के मदद से कट कर लेंगे। मिनी हैक्सो से कट करने के बाद इसको सैंड पेपर के ऊपर रफ करके इसको स्मूथ कर लेंगे। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. मुझे नहीं लगता कि बीच बीच वीडियो में वॉइस ओवर करने की मुझे ज़रूरत है। आप लोग समझ ही जा रहे होंगे और जो मैंने चार्ट बनाया है उससे आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। उसे पुश करके वीडियो को बढ़िया से देखिए और जहाँ पे हार्ड पोर्शन है वहाँ पे मैं वॉइस ओवर करने वाला हूँ। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. इसे सुखाने के बाद आप लोग इसे कलर कर लीजिए जिस कलर से भी आप चाहते हैं। मैं इसे लाइट ब्लू से करने वाला हूँ। Gravity pulls you straight down.
पे वीडियो को पुश करके बढ़िया से इस पेपर को देखिए, आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने पेंट करके सूख भी चुका है और इसके नीचे से अंदर से होल्डर लगा के फिट कर चुका हूँ। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. हमने स्टैंड को 2 बार पेंट किया है, एक पहले बनने से पहले और एक पूरा रेडी होने के बाद। तो आप भी ऐसा करने पे बहुत ही गजब का लुक आएगा। Pulls you straight down. Clear sky. ये बटर पेपर है जो लाइट के हम सामने लगाएंगे ताकि नेचुरल फेस आए, ना ही कि ज़्यादा लाइट आए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. 2 दिनों के बाद हमारा स्क्वायर लाइट बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस, अगर ये स्क्वायर लाइट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल इंडियन क्रिएटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।